Good morning, respected members, and hello, dear students. Hi, this is CA Pratik. I welcome you all to my YouTube channel, GST and Customs Act Fun Learning. Today's topic is GSTR 9 Annual Return Part 2, ITC Details. How to fill ITC details in annual return. Part 1 I had already uploaded few days back. Apologies for the delay. ये part 2 upload करने में delay हो गया. But this part 2, it will give you entire explanation of how to fill the ITC which is availed in 1819 in your GSTR 9. So I've divided this into 4 parts. Part number 1 will be tab 6 of GSTR 9, which is your ITC, which you have availed in your GSTR 3B for 12 months for financial year 1819, how it will be auto-populated and all. Part 2 will be tab number 7 of GSTR 9. Whatever ITC you are required to reverse or you are already reversed and you're blocked input tax credit. Part 3, it will be table 8 of GSTR 9. Your ITC which you have availed, that will be compared with your GSTR 2A, annual GSTR 2A. And part 4 will be other tabs. Some tabs are optional, some are compulsory, some are been relaxed. Everything we are going to understand. So after listening to both the lectures, you will be easily able to file GSTR 9. Okay, so let's begin today's topic, part 2 of GSTR 9 annual return, ITC details. So let us first understand basic understanding and meaning of input tax credit. Suppose I am a manufacturer, trader, or a buyer recipient. Okay, now from various suppliers for the purpose of manufacturing trading, I purchase raw materials. I paid 10 lakh rupees and I paid GST of 1 lakh 80. From various other suppliers, I avail services. I paid 2 lakh rupees and I also paid GST of 36,000. From various other suppliers for manufacturing trading, I paid 40 lakh rupees and purchased capital goods. And I also paid GST of 4 lakh 80,000 rupees. So in short, to various suppliers, I've already paid 52 lakh rupees. This is their money. And on this 52 lakh rupees, I have already paid GST of 6 lakh 96. These suppliers shall collect GST from me, and this 6 lakh 96 they shall pay to the government. So in short, on all these items, I've already paid through this suppliers GST of 6 lakh 96,000 to government. Correct? Now, after using these things, I manufactured finished goods. So I produced finished good and then I sold this finished good to the end user for 1 crore rupees plus GST. So such end user paid me 1 crore rupees. This is my money. And I also collected GST of 18 lakh rupees. Now what I'm telling to government, that I agree that I've collected GST of 18 lakh rupees. GST on outward supply is 18 lakh rupees. But in order to manufacture, I've already paid GST of 6 lakh 96,000 on raw materials, services, capital goods. Whatever GST I pay on raw materials, services, capital goods, this shall be allowed to me as input tax credit. So since I paid GST of 6 lakh 96,000, I will get benefit of it. I will get input tax credit of it. So to government, I'm telling that I've collected GST of 18 lakh rupees on outward supply. I've already paid GST of 6 lakh 96,000 on inward supply. So balance 11 lakh 4,000 I shall pay now to the government. So this is the basic understanding of input tax credit. Whatever GST you pay on purchases, raw materials, services, capital good, that shall be allowed to you as input tax credit. Correct? Now, what are the transactions on which the recipient can claim input tax credit? Let us understand that. Just now we discussed transaction number 1. Suppose I have paid GST on raw material, I have paid GST on services, I have paid GST on capital goods. So whatever GST I have paid, that shall be allowed to me as input tax credit. So this is a normal domestic purchase, service and capital good. आप जो भी GST भरते हो, आपको input tax credit मिलता है. This is transaction number 1. Now transaction 2. Input tax credit on import of goods. Suppose I am importer, not buying from India. I shall come outside India. Okay, so I imported goods of rupees 10 lakh. I imported goods of rupees 10 lakh from USA, Sri Lanka, Japan, anywhere, from outside India. Now, when you import, goods directly doesn't come to your office. They come at the Indian custom port, JNPT or any port. Okay. And then you will have to pay some tax known as custom duty. And you will also have to pay IGST. So whenever you import the good, you have to pay GST at the port. Then only they will give you goods.
Okay, so I filed bill of entry, I paid custom duty, I paid IGST. This IGST which you pay, the IGST of 50,000 which I paid, that shall be allowed to me as input tax credit. So whatever GST आप लोग भरते हो on the import of goods, that is also allowed as input tax credit. So this is transaction number 2. IGST paid on import of goods, that is allowed to you as input tax credit. Correct? This is transaction 2. Now transaction number 3. Transaction 3. Suppose I am a recipient. Section 9 subsection 3, if you are aware, reverse charge. I avail advocate services. I avail GTA services. I took this service. Correct? Now I paid money to them. Okay, under section 9 subsection 3, whatever, whenever you avail services like advocate, GT or any other service in relation to 9 subsection 3, whatever money you pay to them, on that money you are required to pay GST under reverse charge. So recipient is paying GST under reverse charge. Now whatever GST you pay under reverse charge mechanism, that shall also be allowed to you as input tax credit. So this is transaction. Now, after understanding this three transaction, next step, input tax credit to be availed in GSTR 3B monthly. See, there is one return GSTR 3B where you avail ITC. Suppose I am a registered person. I had following inwards applied during the month of April 8. During the month of April 18, say I had imported inputs. I had paid IGST of rupees 1 lakh. That is allowable to me. Second, I had taken advocate services. I had paid GST of 5,000 each. GST paid under RCF, that is also allowable ITC. And third, I had purchased raw materials. I had paid GST of 5,000. I had availed services. I had paid GST of 25,000. And I had purchased capital good. And I paid GST of 50,000. All this GST which I have paid, that shall all be allowed to me as input tax credit. Correct. Now, how I need to declare this? In GSTR 3B. See this. This is the case study. You open GSTR 3B on the common portal. See, the month is April 2018. So I will be opening April 2018 GSTR 3B. Here I need to declare every month my input tax credit details in tab 4. Getting it? Eligible ITC. This is GSTR 3B of April 18. Now, step number 1, what you had done? First, you had imported inputs. You had imported input of rupees 1 lakh rupees. You had imported and paid GST of 1 lakh. Whatever GST you pay on import, that is allowable. So I'm claiming that 1 lakh rupees. Second, I had availed services and I paid GST of 5,000 and 5,000 under reverse charge. That is also allowable. See this inward supply liable to RCM. There I need to declare reverse charge mechanism. And third, all the domestic raw materials, service, capital goods, whatever I purchased, I paid GST. That is also allowable. Where you need to declare. Point number 5, any other ITC or all other ITC. There you need to declare this. So this 5,000 was CG and SG, so 2,500. Balance service and capital goods was IGST. So 25,000 plus 50,000. Total, I will write 75,000. So this 25,000. And then on capital goods also I had paid 50,000. So total will become 75,000. Correct? 25 plus 50. There is no separate column, so 75,000. Okay, so this will become your total ITC for the month of April 2018. Okay, so every registered person every month has to claim ITC in GSTR 3B. Now understand, whatever ITC you are taking each month in your GSTR 3B for the period April 18 to March 19, it shall get auto-populated in GSTR 9 tab number 6. जो आप आईटीसी हर मंथ लेते हो 12 मंथ्स का टोटल ऑटो पॉपुलेट होगा इन टैब 6 of GSTR 9. See this. This is the tab 6 of GSTR 9. You open financial year 18-19 annual return. Okay, annual return you open. You will open the next point, tab number 6 of GSTR 9, ITC away. You can see this in gray color. 10 lakh 50 IGST and all. This is all auto populated. जो भी आप ITC April 18 to March 19 हर month लेते हो, every month, जो भी आप ITC लेते हो in your GSTR 3B, ये 12 महीने का टोटल होके ऑटो पॉपुलेट होता है in tab number 6
of GSTR 9. ठीक है, ये ऑटो पॉपुलेशन, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. Correct? So this is the point. This is the point. That's why I'm going step by step. Now understand tab number 6 of GSTR9. जो भी ऑटो पॉपुलेट हुआ ये तो टोटल हुआ, बाइफर्केशन तो कुछ आया ही नहीं. तो अब हमें बाइफर्केशन और सब करना. सो जो भी आप रॉ मटेरियल पे जीएसटी भरते हो, सर्विसेज पे वॉट एवर जीएसटी यू पे, कैपिटल गुड्स पे जो आप जीएसटी भरते हो, इंपोर्ट पे भी जो आप जीएसटी भरते हो, रिवर्स चार्ज में वॉट एवर जीएसटी यू पेड, ये सब आपको डिक्लेयर करना है in tab number 6 of GSTR 9. Okay, now one case study we will do. Before that, GSTR 3B return, whatever you file each month for the period April 18 to 19, iska cumulative total will be auto populated in tab 6 of GSTR 9. All 12 months total. Okay, one case study I will like to do how to declare in tab number 6. Suppose I am a registered person. I had following inward supply during entire year, financial year 1890, 12 months total. Say I had imported inputs for the entire year. I had paid IGST of rupees 30 lakh. I had availed advocate service for entire year. I had paid GST under reverse charge. This 1515 for the entire year. For entire year, I had purchased raw materials. I had paid GST of 1 crore, 1 crore each. I had availed services. I had paid IGST of 22,000. And I purchased capital good. I paid IGST of 1 lakh. So this is the bifurcation. Okay, now how to declare this in tab number 6 of GSTR 9. See this. Open GSTR 9. The first point, it will all be auto-populated 12 months total, but there is no bifurcation. Now it's our responsibility to give bifurcation. First, for entire year, I paid IGST of 30 lakh on import. See, there is separate row for import of goods. There I will write 30 lakh rupees, whatever IGST I have paid. Second point, I had availed services and I paid GST under reverse charge 1515. There is a tab, point numbers B and C, inward supply liable to reverse charge. So there I will, since it was services, I will write the amount 1515, 1515. Then domestic raw materials are purchased within India. Inputs, inputs. So there is point here, clause B, inputs. Here I will write 1 crore and 1 crore. Whatever GST I paid on raw material, I will write in input. Then I had availed domestic service. I paid IGST of 22,653. There is clause B, input services. Here you will write 22,653. And then you had purchased some capital goods. On that you had paid IGST of 1 lakh. Same, you can see, declare here 1 lakh. So whatever auto-populated data was there, you have given bifurcation of it. Total is perfectly matching. So everything is correct. Everything is correct. This is how you need to give bifurcation in tab number 6 of GSTR. Okay. Now one relaxation in GST. And say this was easy question. That's why we could do this. But when you do this practically, this bifurcation and all is very difficult. No one has maintained input service, capital good bifurcation. Then what? So for the financial year 18-19, government has given relaxations of claiming ITC in GSTR 9. Suppose my ITC for entire year on raw material is 1 lakh 50, 50, 50. On services, this is the GSTR paid. On capital good, this is the GSTR paid. But no client has maintained this separate details. No one has maintained. Okay, so your total ITC is this much. Is the segregation of this mandatory in GSTR 6? What council has suggested? For the financial year 18-19, they have given an option to enter all the input tax credit, total input tax credit in the input section. Irrespective whether it is for raw materials, services, capital goods, forget it. You can declare entire in input section. See this. This is your tab number 6 of GSTR 9. Open the tab. Whatever your ITC is there, total ITC, 1 lakh 75, 2 lakh 10, ignore the bifurcation. Ignore the bifurcation. Okay, whatever your total ITC is there, you can declare itself in tab number 6, input. Inputs, here only you can declare entire amount if you have not maintained separate. Because no client has maintained. So I will write here only entire amount, 1 lakh 75, then in CGST 2 lakh 10 and SGST 2 lakh 10. Okay, I don't need to give this bifurcation. So this option is there for GSTR 9 of financial year 18-19. Okay, but whatever GST on import and all is there, you need to declare it in separate. Only for this three, that is an option. Correct?
Now, third point, tab 7 of GSTR 9. What is this? Ineligible ITC and ITC reversal. See, first I will explain you ineligible ITC and ITC reversal. You are aware about section 17.5? See this, section 17.5, tab number 7 of GSTR 9. Whatever GST is blocked under 17.5, that you need to declare. I will explain that. Whatever ITC is being reversed under rule 42, 43, that you have to declare in tab 7. Whatever ITC is being reversed as per rule 37, 39, and any other reversal, all your ITC which is disallowed or it is being reversed, you have to give such declaration in tab number 7 of GSTR 9. Okay, now one by one, let us understand. See this. First, just a demo of tab 7. Open GSTR 9. This is tab number 7. You can see ITC reversed and ineligible ITC. All the details you are going to get. So first was 17.5 blocked input tax credit. Whatever was there, that row is here. Rule 42, Rule 43, whatever ITC is being reversed, that row is there. Then Rule 37, Rule 39, whatever is being reversed. And last, other reversals. All the reversals ineligible you have to declare in tab 7 of GSTR 9. So first I'm explaining you ineligible NTC or blocked input tax credit section 17.5. When you are not allowed ITC, see this, block credit. But whenever you purchase motor car, whether for business purpose, whatever GST you pay, you are not allowed ITC. Okay. Second, when you have restaurant, catering service, health and fitness service, whatever GST you pay, whether it's for official purpose, your employee, client, whatever GST you pay, you are not allowed ITC. Similarly, work contract services avail. जो भी आप उस पे GST भरते हो on your building construction, office construction, you are not allowed ITC because it is blocked. Similarly, if you construct immovable property on own account, you are not allowed ITC. Next, if your goods are kept in godown, suddenly the goods got lost or there was a fire, the goods got stolen, whatever GST you are paid, you will have to reverse that. And if you purchase from composition dealer, you are not allowed input tax credit. So this is section 17.5. Just a demo for you. Whatever GST आप लोग भरते हो, on this you are not allowed input tax credit because this section blocks it. Okay. Second point, rule 37 of the CGST rules. This is important. Very good GST audit point. Payment by the registered person within 180 days. Suppose from this supplier, I had purchased goods. I had purchased goods of rupees 10 lakh plus 5% GST. What is the date? On 1st of October 2018. Okay. Hence, since I had purchased, I availed input tax credit in my GSTR 3B of October 2018. Correct. Correct. Now, as per Rule 37, recipients are required to pay to the supplier within 180 days. Within 180 days of the issuance of invoice. So, उसने invoice raise किया था on 1st October 18. मुझे उसको payment कर देना था by 180 days, means 31st March 19. Okay, but as a recipient, I did not pay within 180 days. Then whatever input tax credit of 50,000 I had availed, now I will have to reverse. This is what rule 37 says. अगर मैं 180 days में amount repay नहीं करता, तो whatever ITC I have availed, it has to be reversed along with interest. Along with interest, मुझे ये reverse करना. So all this GST audit point, be very careful. This also reversal, tab number 7. Third reversal, rule 42, rule 43 of the CGST rules. See, this is also most important point. GST ITC, when you are giving outward taxable supply as well as outward exempt supply, how the ITC works. Suppose Mr. Amir is running school, whatever school fee is earning is exempt under GST and is also learning classes. Okay, he's also running classes. That is a taxable supply. That is not exempt. School fees is 5 crore. Classes fees is 15 crore. Correct? Now, he purchased one software. In that, he is doing accounting of school student also. And in same software, he is doing accounting of classes student also. For rupee 1 crore plus 18 lakh GST. Now, understand. Can you avail entire ITC of 18 lakh? Answer is no. If you are giving exempt supply, you cannot avail ITC. In the given case,
Amir is giving exempt supply as well as taxable supply. So he cannot take entire ITC of 18 lakh. He can take ITC proportionally. Some ITC will be disallowed. See, how much ITC will be disallowed? See, total input tax credit into exempt supply divide by total supply, इतना input tax credit आपको reverse करना. This is what Rule 42 and 43 are suggesting. So how much was total ITC? 18 lakh rupees. How much was exempt turnover? School fees? 5 crore. How much was total turnover? 5 plus 15, 20 crore. So out of 18 lakh, 4 lakh 50,000 का ITC disallow हो जाएगा. Balance 13 lakh 50 he can avail. So this is another point of reversal, Rule 42 and Rule 43 of the CGST rules. Okay, and then there are some other reversals, common GST audit point. Suppose I am a recipient, I did not have tax invoice, खो गया था या नहीं था invoice. So जो भी GST I had paid, I shall not be allowed ITC. Or I have some fake GST invoices, auditor caught me, he will reverse my ITC. Or I wrongly availed ITC, some error which was not eligible. Auditor will remove my ITC. And some ITC, some goods I purchased at my home, like AC and refrigerator. And I avail input tax credit in my business. All those things auditor shall reverse my ITC. So these are all other reversals point. So these are all the items you need to declare in tab number 7 of GSTR 9. See how you need to present. This one case study I will like to do with you. Suppose my total input tax credit on raw material is this. Total input tax credit for services is this. ITC on purchase of motor car is this. Now this is blocked under 17.5. I cannot avail. ITC on works contract service. This is also blocked under 17.5. ITC on import of good, that is allowed. ITC of GST paid under reverse charge, that is also allowed. My total input tax credit is this. You can see, now understand. Next point, my taxable outward supply is 10 crore and my exempt outward supply is 20 crore. So my total is 30 crore. Assume all the input tax credit are common, which are used for taxable outward supply as well as exempt outward supply. Now, how you need to declare this? So left hand side, there is question and right hand side, you can see the portal. Okay, now let us understand how to present this entire case study in tab number 6 and tab number 7. See, first point, tab number 6. Okay, so this was my ITC on raw material purchase. This is the eligible ITC. So I had paid on input 1 lakh 50 IGST, 50,000 CG and 50,000 SG. This I am declaring. Next point, my total ITC. Now later I have availed certain services. Later, I have availed certain services of rupees domestic service. I have paid GST of 25, 10 and 10. This I will declare against input services, 25, 10 and 10. Third point, I had purchased or availed some, I had purchased or availed motor car. This motor car is blocked, it is not allowed. But first in tab number 6, you need to declare and then you need to reverse in tab 7. Then you need to reverse. So first I'm adding this motor car in input, 50 plus 152, 2 lakh. Then I will reverse in tab 7. That also I will show to you. Works contract, that is also blocked. But first I will add in tab number 6, 1 lakh plus 25, so 1 lakh 25,000. And then I will reverse in tab number 7. ITC on import is 10,000. So import of goods is 10,000 rupees. So I will write here against input 10,000. This bifurcation I have to give on input. ITC paid on reverse charge is 25,000. So there is one option, inward supply received in clause C and D. Wherever applicable, you can declare it 25,000 and 25,000. So I am declaring it in clause 25,000 and 25,000. So I'm declaring this in clause number D, 25 and 25. You could have declared in input services. Now your total ITC is 285, 235, 235. See this. You can see 285, 235, 235. Matched with your purchase. This is your total. It includes eligible as well as in uneligible. Now come to tab 7. Now come to tab 7. See this. Your total supply is 10 crore and taxable supply is 10 crore and exempt supply is 20 crore. Okay, and your ITC all is common. ITC all is common. See this, there is block credit which you have availed in tab 6. That is not allowed. So first you need to reverse that.
First, I will reverse that ITC. So I will open tab number 7 of GSTR 9 and then I will reverse this. See, this is your tab 7. Whatever ITC on purchase of motor car was there 150, 150, I will reverse this as per 17.5. It will automatically reduce. जो भी टैब 6 का टोटल था उसमें से देखो अपने आप रिड्यूस हो रहा है नीचे, ठीक है. एंड देन यू हैव टेकन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज 1 लाख, दैट आप वो भी आप लोग रिवर्स करो. सो जो भी आपका 285, 235, 235 था उसमें से अपने आप रिड्यूस हो गया. यू कैन सी लेफ्ट एंड राइट, ठीक है. 185, 85 एंड 85 ये आपका सेव होगा. सो दिस इज योर नेट एलिजिबल आइटम, इतना आप एलिजिबल हो. लेकिन देयर इज वन रूल 42 व्हिच आई जस्ट नाउ टॉट. You are giving outward taxable supply as well as outward exempt supply. So certain ITC disallowed. So total ITC is 185 into 20 crore is your exempt supply divided by total supply which is 30 crore. So 185 में से 1,23,000 आपका ITC रिवर्स हो जाएगा. जो आपको रूल 42 में यहाँ पे डिक्लेयर करना है 1,23,000 उतना ITC आपका और कम हो जाएगा. ओके ये तो IGST हुआ. सिमिलरली CG एंड SG कहिए आपका टोटल ITC कितना एलिजिबल 85 था, कॉमन है, इनटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल. सो 56,667 भी ITC आपका रिवर्स हो जाएगा. सो ये CGST भी आपका ITC इतना प्रोपोर्शनेटली रिवर्स होगी. सो फाइनली आफ्टर ऑल द रिवर्सल्स आपका ITC ये इतना ही आपको मिलेगा. 61,667, 28,333 एंड 28,333 इतना ही आप बैलेंस तो आपका रिवर्स हो गया. So this is how you need to declare. This is how first in tab 6 you declare total ITC eligible plus ineligible. Then in tab 7 you reverse the ITC which is ineligible and as well as rule 42 and other rules. Correct? Okay, so this is how you need to declare in GSTR 9. Understood? Okay, now let's move to next point. See this. Next point is mismatch in input tax credit availed in GSTR 3B with books of account. Common query which all the client are going to ask us. See, my GSTR 3B return is giving input tax credit different figure. However, my books of account means your software, Tally, SAP, Oracle, whatever you are using is giving different figure. This is bound to happen. This is bound to happen. Now, which input tax credit you need to take in GSTR 9? बिकॉज 3B से तो ऑटो पॉपुलेट होगा, तो कौन सा लूं मैं, जो 3B में है वो या बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो. कॉमन क्वेरी. से फॉर एग्जांपल योर GSTR 3B 12 मंथ्स का टोटल वो दिखा रहा है कि आपका एलिजिबल ITC है 10 लाख, बट व्हेन ऑडिटर ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट ही फाउंड दैट योर एलिजिबल ITC इज 14 लाख. सो कौन सा लोगे आप 3B में, 10 लाख रुपीज या 14 लाख? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हायर है. सेकेंड थिंग ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका GSTR 3B में देखा तो आपका टोटल ITC 10 लाख है, लेकिन जब ऑडिटर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट किए ही आइडेंटिफाइड बॉस यू हैव टेकन एक्स्ट्रा, योर एलिजिबल ITC वाज ओनली 8 लाख. सो हाउ मच यू नीड टू डिक्लेयर इन GSTR 9? ठीक है, तो देखो व्हाट इज द सॉल्यूशन. व्हाट इज द सॉल्यूशन गिवन? इनपुट टैक्स क्रेडिट इन GSTR 9 जो भी आपका ऑटो पॉपुलेटेड एक्चुअल एलिजिबल ITC है वो, और जो आपका ऑडिटेड अकाउंट्स में ITC है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो, whichever is less उतना ही आप ITC GSTR 9 में ले सकते हो. Whatever ITC you have availed for 12 months in GSTR 3B or your eligible ITC as per audited books of account, whichever is less आप उतना ही ITC ले सकते हो. Balance ITC आपको reverse करना है. All the case studies we are going to do. Okay, so let us understand with case studies. Let us understand with case studies. Case study 1. See, input tax credit in GSTR 3B for April 18 to March 19. आपने 12 महीने में इतना लिया था. IGST 10 lakh 50, CGST 29,000, SGST 29,000. However, auditor ने आपका books of accounts audit किया. He identified, boss, you have availed extra. Your IGST eligible is 1040, CGST is 24, and SGST 24. Now, figures in GSTR 9 3B में जो भी आप 12 मंथ्स डिक्लेयर करोगे वो तो ऑटो पॉपुलेट करेगा. ये देखो आपका यहाँ पे जो भी आपका टैब 6 है यहाँ पे तो फिगर ऑटो पॉपुलेट हो गया. 10, 50, 29 जो भी आपने 12 महीने डिक्लेयर किया था वही ऑटो पॉपुलेट होगा यहाँ पे 10 लाख 50. ठीक है, सो ये ऑटो पॉपुलेट हो चुका है इन टैब नंबर 6 ऑफ GSTR 9. नाउ मेरा क्वेश्चन आप लोगों से,
कि हाउ मच इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोग डिक्लेयर कर, ऑटो पॉपुलेट हुआ वो तो ठीक है, बट अभी तो गलती आइडेंटिफाई हुई, तो आप GSTR 9 में कितना डिक्लेयर कर सकते, जो आपका एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ऑडिटेड, या एज पर 3B कौन सा करोगे, सिंस एक्चुअल ITC एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट इज लोअर, आपको वो क्लेम करना है। जो भी एक्सेस ITC आपने 3B में किया है उसको आप रिवर्स करोगे एंड पे करोगे थ्रू DRC03 फॉर्म। ठीक है, तो ये देखो आपको वो कैसे करना है। See this, how you need to do this. Your eligible ITC as per books was only 1040. आपको ऑटो पॉपुलेट भले 1050 है, मैं उतना ही लूंगा 1040। सो आप भले 1050 ऑटो पॉपुलेट हुआ है, मैं क्लेम करूंगा 1040। भले 29,000 ऑटो पॉपुलेट हो, मैं क्लेम कर रहा हूँ जो सही है 24,000। बैलेंस आप नीचे देखोगे तो अपने आप वो रिवर्स हो गया नेगेटिव। नेट कॉलम ओ देखिए, ये सब रिवर्स हो गया। सो फाइनल आपका एलिजिबल 1040 24 24 ही आ। ओके, सो ये जो भी आपने रिवर्स किया ये तो आपको पे करना पड़ेगा। कैसे पे करोगे, कैसे पे करोगे, थ्रू फॉर्म DRC03। सो ये आपका ITC रिवर्स हुआ, अब आपको पे करना है। सो आप सर्विसेज में जाइए, माई एप्लीकेशन में जाइए एंड एक फॉर्म दिख रहा है DRC03, यहाँ पे आप क्लिक करके पे कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करके पे कर सकते हो एंड पे करोगे थ्रू कैश लेजर, नॉट क्रेडिट लेजर। पे करोगे कौन से लेजर से, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी फिर मैन्युअल पे करना पड़ेगा चालान से। ओके, भले आपके पास ITC आप वो यूज नहीं कर सकते, पे करो थ्रू कैश लेजर। सो दिस इज द केस स्टडी। ठीक है, ये कॉमन चीजें होगी, ऑडिटर कुछ ना कुछ तो डिसअलाउ करेगा, आपको पे करना है थ्रू फॉर्म DRC03। अंडरस्टूड? नाउ केस स्टडी 2 इसका उल्टा। सपोज इन योर GSTR 3B April 18 to March 19, आपका टोटल 12 मंथ्स का टोटल IGST ITC is 1050, CGST ITC is 29, SGST ITC is 29. However, auditor when he audited the books of account, he asked me, what have you done? Your eligible ITC is more, IGST 1060, CGST 35, SGST 35. Now what should I do? Figures to got auto populated. This figures will get auto populated in tab 6. जो भी आप 12 मंथ्स भरोगे उसका टोटल तो 9 में ऑटो पॉपुलेट हो चुका। करेक्ट, ये देखो ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या मैं 9 में जो बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस ITC दिख रहा है वो ले लूं, या फिर मेरे GSTR 3B में जो है वो लूं? क्या लगता है, ऑडिटेड अकाउंट्स इस बार ज्यादा ITC दिखा रहा है। सी गवर्नमेंट ने क्या बोला, GSTR 9 ये एक अपॉर्चुनिटी है टू पे GST। यू कैन नॉट अवेल ITC थ्रू GSTR 9। जो भी आपका मिस्ड ITC है ये आप GSTR 9 में नहीं ले सकते। आई रिपीट, जो भी आपका मिस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये आप GSTR 9 में नहीं ले सकते। ओके, सो जो भी आपका छूट गया, गवर्नमेंट बोलो छोड़ दो, नहीं लिया तो गया। सो जो भी आपका यहाँ ऑटो पॉपुलेट है उससे कम कर सकते हो बट उससे बढ़ा नहीं सकते। पोर्टल अलाउ नहीं करेगा, पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू पे, यू कैन नॉट अवेल मिस्ड ITC। सो जहाँ पे भले आप 10 लाख फिर 60,000 लिखो तो भी 1050 ही आएगा। तो आपका जो भी विच एवर इज लेस 3B में था आप उतना ही, ये जो भी 1060 35 जो भी आपका मिस हो गया वो मिस हो गया, पोर्टल आपको अलाउ नहीं करता। क्लियर? सो हमने क्या सीखा यहाँ पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन GSTR 9, जो भी आपका एक्चुअल एलिजिबल IT से 12 महीने का टोटल एज पर 3B वो, या आपका ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से वो, विच एवर इज लेस आप उतना ही ITC लोगे, विच एवर इज लेस। ठीक है, जो भी आपका ITC छूट गया है 18-19 का, अभी आप 2 अक्टूबर 2020 में जब एनुअल रिटर्न भर रहे हो उसमें आप ITC नहीं ले सकते, इट इज गॉन, इट इज गॉन। ठीक है, बट लेट अस अंडरस्टैंड केस स्टडी 3। सी दिस इज अ कॉमन थिंग व्हिच मस्ट हैव हैपेंड विद योर क्लाइंट। Your input tax credit in GSTR 3B of April 18-19 is this. Input tax credit as per books of account, that is also same. Very good. So ITC as per 3B is perfectly matching as per ITC of books of account. So what is the problem? You know what is the problem? During audit, auditor found that registered person, यानी मैंने गलती से input tax credit ले लिया था of motor car. This is the blocked, but I wrongly availed. मैंने ले लिया था और रिवर्स भी नहीं किया था, ये मोटर कार। Now auditor has pinpointed that mistake and he wants to reverse it. So ये कैसे करेंगे?
we must declare this in tab 7 of GSTR 9 एंड ये जो भी IGST वो रिवर्स करेगा ये हमें पे करना पड़ेगा थ्रू DRC03। ये भी एक कॉमन है। सो ये कैसे करेंगे हम? पहले तो आपका टैब 6 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा ये वाला। ओके, इसमें से 50,000 का IGST गलत था। पहले तो जो भी टोटल आईटी से आप यहाँ पे लिख दीजिए, एलिजिबल प्लस इनएल दोनों ही यहाँ पे आ जाए क्योंकि वही ऑटो पॉपुलेट हुआ। एंड देन टैब 7 में आपका 50,000 का आईटीसी गलत था मोटर कार पे, तो उतना आप रिवर्स कीजिए इन टैब 7। जो भी रिवर्सल है ब्लॉक्ड है वो यहाँ पे आएगा। यू कैन सी टोटल नाउ 17,500 में 50,000 का मोटर कार का था वो मैं लिख देता हूँ। सो पोर्टल अपने आप उतना कम कर दे, अपने आप उतना कम कर। अब ये जो आईटीसी रिवर्स क्या 50,000 इसका क्या करोगे? वी विल पे थ्रू विच फॉर्म? DRC03 करके जो फॉर्म है हम उससे ये अमाउंट पे करेंगे। Okay, so this is the case study which I wanted to explain. ये सब common query है। Case study 4. Again, your IGST as per 3B is this much. IGST as per books of account this much. So both are matching. Very good. But during audit, auditor find out that I, as a registered person, have not made payment to the supplier greater than 180 days. 180 days हो गए but मैंने पे नहीं किया. So this IGST 5,000 auditor will reverse. Correct. Similarly, I had purchased one AC at my home, personal purpose, but मैंने उसका भी ITC ले लिया. That is also not allowed. वो भी ऑफिस ऑडिटर मेरा रिवर्स करेगा. So this AC का ITC भी वो रिवर्स करेगा. And third, मेरा एनुअल जनरल मीटिंग था, बोर्ड मीटिंग था, so I had availed catering service. Now on catering service also I had paid GST of 2,000 each, but that is also blocked under 17.5. By mistake, I had availed that ITC also. Okay, so this was a mistake from my end. This was a mistake. Auditor want to reverse it. Where he will reverse? Answer is he will reverse in tab number 7 of GSTR 9. These are all the GST audit points which you need to be careful. So ITC जो भी आप रिवर्स करोगे टैब 7 में दिखाओगे एंड देन जो भी आप रिवर्स करोगे वो पे करोगे along with interest through DRC03. Through DRC03. So ये देखो how to present this. First, तो जो भी आपका 3B में है वो सही है, वो ही ऑटो पॉपुलेट होगा। कौन से टैब में? टैब 6. So that thing is already auto populate. But then टैब 7 में हम उसको रिवर्स करेंगे। टैब 7 में रिवर्स करेंगे। क्या क्या मिस्टेक हुई थी? 180 डेज में पे नहीं किया था तो रूल 37 में आईटी से रिवर्स होगा 5,000 रुपीज IGST. सो रूल 37 में मैं IGST में 5,000 रुपीज रिवर्स कर देता हूँ। कर दिया। सेकेंड पॉइंट, मैंने कुछ पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा था 15,000 एंड मैंने उसको आईटी से लिया, वो भी ऑडिटर रिवर्स करेगा 15,000. ठीक है, उसका कोई सेपरेट नहीं है। सो अदर रिवर्सल में आप लिख सकते हो 15,000 रुपीज अदर रिवर्सल। पर्सनल पर्पस आप लिख सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने एजीएम के लिए केटरिंग रखा था, उस पे भी मैंने आईटी से लिया, दैट इज ब्लॉक्ड अंडर 17.5. नहीं मिलता केटरिंग एंड फूड का, सो वो भी रिवर्स करेगा अंडर 17.5. सो वॉट एवर आईटीसी द ऑडिटर विल रिवर्स, उतना मेरा कम हो गया एंड बैलेंस ही मुझे आईटीसी मिला। देखा 20,000 से कम हो गया, 29,596 था 27 दिख रहा है। सो ये सब होके आप सेव कीजिए, आपका टैब 7 कंप्लीट हो। एंड देन जो भी आप रिवर्स करोगे आप उसको पे करोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट थ्रू DRC03। कौन से लेजर से? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही ऑफसेट करना। ओके, understood this point? Now see one query which many auditors are asking, that whatever mistakes these auditors have found during audit, whether to declare or rectify such error in GSTR 9 or in GSTR 9C, because 9 में auditor का sign नहीं आता, but 9C में auditor is signing. It is digital signature. If everything is rectified in 9, what is the purpose of 9C? But I will advise you, see, I will request all of you to disclose all such ITC reversals and in GSTR 9. In GSTR 9. You know why? You know why? Because there is one section 73, demand and all, which says that if you declare in 73, it is non-fraud. आपको penalty कम आएगा, आपको penalty and all कम आएगा। ठीक है, बट अगर मैं 9C में ये रिवर्स करके भरवाता हूँ, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको पेनल्टी आ सकते हैं सेक्शन 74 में फ्रॉड। सो आई रिक्वेस्ट
कि ये सब आईटीसी रिवर्सल्स एंड जो भी आप कर रहे हो ये जीएसटीआर 9 में करके खत्म कर दो, 9C में मत करो। जीएसटीआर 9 में सिर्फ ऑडिटर का साइन नहीं आता, सिर्फ असेसी का साइन आता, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन। सो ये ऐसा लगेगा दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज फाउंड आउट मिस्टेक, ही हैज रिवर्स द आईटीसी एंड ही इज पेइंग। सो उसको नोटिस फ्यूचर में कुछ भी हो तो सेक्शन 73 में आए, नॉन फ्रॉड। बट अगर 9C में डिक्लेयर करके आप कर रहे हो, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन का इरादा नहीं था, आप कर रहे हो, सो उसको नोटिस आ सकती है सेक्शन 74। So this is just a suggestion from me. Rest is up to you. Okay. Now, input tax credit of 2017-18 जो हमने अवेल किए 18-19 में, और input tax credit of 18-19 which we have availed in 19-20. See this. Let us understand through a case study. Suppose he is a registered person. Input tax credit of financial year 17-18 was there. He forgot to claim. हो सकता है ना, भूल गया. So what is the solution? Is there a solution? I'm talking about ITC of financial year 17-18. करंट ईयर का नहीं बोल रहा हूँ, 17-18 का. तो कोई सॉल्यूशन था? Yes, there was one solution. If there was tax credit of financial year 17-18, आप लोगों के पास ऑप्शन था कि अगर आप 17-18 में भूल गए हो तो वो आईटी से आप ले सकते हो टिल सितंबर 2018 के जीएसटीआर 3B. 6 months फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे. ओके, फिर ये पीरियड एक्सटेंड हो चुका था टिल मार्च 19. सो 17-18 का आईटीसी आप लोगों ने 18-19 में लिया, करेक्ट, अलाउड है, पोर्टल अलाउस. सो ऑल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आपने अवेल किया है इन 18-19 वो तो ऑटो पॉपुलेट होगा इन टैब 6. कौन सा 17-18 का जो आपने 18-19 में लिया वो भी ऑटो पॉपुलेट होगा इन टैब 6. 18-19 का आईटीसी जो करेक्टली आपने 18-19 में लिया वो भी ऑटो पॉपुलेट होगा इन टैब 6 ऑफ जीएसटीआर 9. सो सी दिस, ये जो आपका टैब 6 है 10,50,000, इसमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये आईटी से आपने 18-19 में अवेल किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल. तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि कुछ आईटीसी 18-19 का है वो करेक्ट है एंड कुछ आईटीसी 17-18 का है जो आपने 3B में 18-19 में लिया. तो ये जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है इसमें 17-18 का भी आईटीसी हो सकता है एंड 18-19 का भी आईटीसी हो सकता है. ओके, ये हमें ध्यान रखना है. अब इसको कैसे करना है दैट आई विल एक्सप्लेन. See, similarly, case study 6, there was one ITC of 18-19. Okay, I forgot to claim. What is the solution? Same solution. ITC of 18-19, you could have availed till GSTR 3B of September 19. मतलब 18-19 फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है प्लस 6 months आप इस ITC ले सकते थे till you file GSTR 3B of September 2019, 6 months from the end of financial. So ध्यान से सोचो, इन टैब नंबर 6 सिर्फ वही आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होगा, जो आपने 3B ऑफ 18-19 में लिया. जो आपने 18-19 का आईटीसी 19-20 में लिया है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा. सो इट शैल नॉट ऑटो पॉपुलेट दैट. जो आईटीसी आपने 19-20 में लिया है ये आप कहाँ डिक्लेयर करोगे? टैब नंबर 13 में. बताता हूँ. सी दिस पॉइंट, सी दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी, जो भी आपने 18-19 का आईटीसी 18-19 में लिया वो तो टैब 6 में ऑटो पॉपुलेट होगा ही होगा, लेकिन 18-19 का आईटीसी ये जो आपका टैब 6 है इसमें सिर्फ 18-19 जो भी आपने 3B ऑफ 18-19 में लिया है सिर्फ उतना ही ऑटो पॉपुलेट होगा. लेकिन 18-19 का आईटीसी जो आपने 19-20 ऑफ 3B में लिया है वो यहाँ पे दिखाना है टैब नंबर 13 में. यू कैन सी दिस हेडिंग पीरियड for financial series tab 13 IT survey for the previous financial year. यहाँ पे आपको फिगर सिर्फ डिक्लेयर करना है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन. सी दिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो आप अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में डिक्लेयर करें, सिर्फ ये टैब 13 में डिक्लेयर करना है, इससे कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं, जस्ट अ डिक्लेरेशन. ओके, नाउ सी दिस figures declared in tab 13 is just a declaration. मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि मेरा 18-19 का आईटीसी था जो मैंने 19-20 में लिया, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ सी वन मोर केस स्टडी.
Suppose my total eligible ITC was this much for financial year 18-19. Okay, input tax credit availed in 3B of 18-19 was 10 lakh 50, CGST 29, SGST 29, and जो भी मेरा छूट गया था वो मैंने सब्सिक्वेंट ईयर अप्रैल 19 6 मंथ्स तक अलाउड था, सो वो मैंने अवेल किया था इन सब्सिक्वेंट मंथ 24,5,704. ठीक है, टोटल मैच हो गया. अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको आप GSTR 9 में प्रेजेंट कैसे करोगे वो समझो. ओके, पहले जो आपने 3B 18-19 में लिया है उतना ही ऑटो पॉपुलेट यहाँ होने वाला है. सो यही मैंने लिया था 18-19 में 10, 50, 29, 29, वही ऑटो पॉपुलेट हो. जो आप 19-20 में लोगे वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होने वाला. सो मैं उतना ही कर रहा हूँ जो मैंने 18-19 में लिया था, वही मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ, वही मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ. हाँ, लेकिन टैब नंबर 13 में मैं सिर्फ डिक्लेरेशन दूंगा कि ये 18-19 का था बॉस, बट मैंने 19-20 में इसका क्रेडिट लिया है. वो मैं GSTR 9 ऑफ 19-20 भरूंगा, वहां पे डिक्लेयर करूंगा. यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को दिखा रहा हूँ इन टैब 13. यू कैन सी द हेडिंग 18-19 का ITC 19-20. ओके, जस्ट अ डिक्लेरेशन, कोई टोटल में इम्पैक्ट आने वाला नहीं. सो कितना था वो 24,098, सिर्फ डिक्लेरेशन देखा, नीचे फिगर्स विल रिमेन सेम 5,704. Just a declaration that 18-19 ka ITC I have availed in 19-20, I will claim it in GSTR 9 of 19-20. That's it. Okay, so your declaration is must. Understood? Case study 8. Suppose ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, होने वाला है, बट ठीक है. IGST ITC था December 18 में 1060. लेटर मुझे रियलाइज हुआ कि 9098 इनएलिजिबल था आउट ऑफ दिस 1060. दिसंबर मंथ के 3B में मैंने 10,60,000 पूरा ले लिया. बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इसमें से 9098 एलिजिबल नहीं था. सो मैंने वो करेक्टली मार्च मंथ का जब 3B भरा उसमें रिवर्स कर दिया. सेम फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स कर दिया, पे कर दिया विद इंटरेस्ट. सो ऑटो पॉपुलेट क्या होगा इन टैब 6? रॉन्ग ITC जो अवेल हुआ है वो मैंने रिवर्स कर दिया है इन द सेम फाइनेंशियल. तो ऑटो पॉपुलेट फिगर क्या होगा? सी, सिंस 18-19 का रॉन्ग ITC रजिस्टर्ड पर्सन ने 18-19 में रिवर्स कर दिया है, तो टैब सिर्फ नेट फिगर दिखाएगा. टैब 6 रिवर्स करने के बाद जो फिगर आता है वो ही दिखाएगा. सी दिस. सो यहाँ पे आप टैब 6 ओपन कीजिए, 10,50,000 ही दिखा रहा है. 10 लाख मतलब 10,60,000, यही 10,50,000 नेट आफ्टर रिवर्सल फिगर ही दिखा रहा है. तो जो भी आपका ग्रॉस ITC था लेस जो रिवर्सल, दोनों ही आपने 18-19 में कर दिया, तो वो नेट फिगर ही दिखाएगा, विच इज करेक्ट, क्योंकि आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दिया. लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट December 18 में 10,50,000 था, लेकिन बाद में मुझे मई में रियलाइज हुआ कि ये 10,50,000 में से 5,000 आई वॉज नॉट एलिजिबल. कब रियलाइज हुआ? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मई 2019 आफ्टर 18-19. सो वो मैंने ITC से रिवर्स किया इन GSTR 3B ऑफ मई 2019. मैंने भर भी दिया, लेकिन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल. अब ऑटो पॉपुलेट फिगर जो टैब 6 में वो कौन सा होगा? ये ITC आपने 18-19 का 18-19 में रिवर्स नहीं किया है, ये आपने 19-20 में रिवर्स किया. सो जो आपका टैब 6 है ना, टैब 6 जो 18-19 का टोटल है वो पकड़ता है, 18-19 में जो अवेल किया है वो पकड़ता है. सो वो टोटल फिगर 10,50,000 ही पकड़ेगा. एंड जो भी आपने सब्सिक्वेंट ईयर में रिवर्स किया है वो आपको पता है कहाँ डिक्लेयर करना है? टैब 12. टैब 12 में उसको आपको डिक्लेयर करना है. आई विल शो यू, सी हाउ दिस विल वर्क ऑन पोर्टल. यही आपका था 10,50,000 जो 18-19 का आपने 18-19 में पूरा ले लिया, रिवर्स 18-19 में नहीं हुआ. सो ऑटो पॉपुलेट पूरा होगा 10,50,000, क्योंकि वो 3B का टोटल करता है. सो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे पूरा होगा 10,50,000. ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट देखिए, ये आपको दिख रहा है टैब 10, 11, 12, 13. आपने 18-19 का ITC जो रिवर्स किया है वो यहाँ टैब नंबर 12 में डिक्लेयर करना है, रिवर्सल ऑफ ITC. सो ये 5,000 रुपए जो आपने रिवर्स किए हैं इन May 19 आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे टैब नंबर 12, 5,000 रुपीज. जैसे ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, इससे कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, इससे कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 19-20 में डिक्लेयर कर दिया. ओके, सो ये आपको टैब 18-19 का ITC जो आप 19-20 में रिवर्स कर रहे हो, आपको यहाँ टैब 12 में देना. ओके, 18-19 का ITC जो आपने नेक्स्ट ईयर अवेल किया है वो टैब 13 में देना.
Case study 10. Suppose I'm availing IGST ITC of 10 lakh 50,902 in financial year 18-19. Now, during audit, auditor found out that out of this 50,000 was not eligible. Correct. So this is not 18-19 ka 19-20 or 17-18 ka 18. No, nothing like it. Same financial year. There was one mistake which I wrongly did. Now what he will do? This ITC is not reversed in 3B. So he will declare this in tab number 7 of GSTR 9. He will declare this in tab number 7 of GSTR 9. अगर 18-19 का ITC 19-20 में रिवर्स करना होता तो टैब 12 आता. ये 18-19 का आईटीसी है जो आपने 18-19 में ही किया तो आपको टैब 7 में ही कंटिन्यू करना. ओके, सो कंक्लूजन क्या आ रहा है? अगर 18-19 का आईटीसी आपने 18-19 में ही कर दिया तो इम्पैक्ट टैब 6 में नेट फिगर ही आएगा जो हमने अभी केस स्टडी किया. 1 लाख था 10,000 आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स कर दिया तो 90,000 ही ऑटो पॉपुलेट होगा, टैब 6 में इम्पैक्ट होगा. लेकिन 18-19 का आईटीसी अगर 19-20 में हुआ, अगर 19-20 में रिवर्स हुआ है तो टैब 12 में आएगा. तो टैब 12 में रिवर्स आएगा दिखाना. और 18-19 का आईटीसी ना ही 18-19 में रिवर्स हुआ, ना ही 19-20 में रिवर्स हुआ. ऑडिटर ने अभी पकड़ा आपको अक्टूबर 2020 में, तो वो कहाँ रिवर्सल दिखाएगा? टैब नंबर 7. सो ये टैब्स आपको थोड़े ध्यान देने हैं. टैब 12 18-19 का अगर 19-20 में हुआ तो टैब 12, 18-19 का अगर आज तक हुआ नहीं अभी करोगे तो टैब नंबर 7 में. ये टैब्स थोड़े ध्यान दें. Now see this tab 12 of GSTR 9 जो अभी हमने सीखा, reversal of input tax credit in subsequent year, and tab 13 of GSTR 9 input tax credit availed in preceding year. ये both the tabs are optional. दोनों ही tab optional कर दिए for the financial year 18-19. So do not worry, even if you do not declare this for the financial year 18-19, both these tabs are optional. Optional, मत declare करना, चलेगा. Now let's move to next point, tab 8 of GSTR 9. ये एक reconciliation है. आपका GSTR 3B जो आपने ITC लिया with GSTR 2A. See, this part I'm going to explain in 4 steps. Step number 1, I will explain you GSTR 2A. Step 2, Rule 36 सब Rule 4A का नया रूल आया है वो explain करूंगा. थर्ड, फिर आपको टैब 8 एक्सप्लेन करूंगा, न्यू टेबल 8A जो इंट्रोड्यूस हुआ है. ये 4 थिंग्स मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप वाइज. सो स्टेप नंबर 1, व्हाट इज GSTR 2A? सपोज आई एम अ सेलर, अनिल सर इज अ बायर. मैंने उनको गुड्स सेल किए, ये सारी इनवॉइस डिटेल्स है. नाउ सी आई हैव सोल्ड दिस गुड्स. ओके, अगेंस्ट दिस he paid me 1480 net amount. These are my money. And I will also collect what? GST from it. This GST of 266 which I have collected, I will pay to the government. So what is the conclusion? Supplier collects GST and pay it to the government. And whatever GST this recipient has paid, what he will get? He will get the input tax credit for this amount. So rupees 266 ka recipient shall get input tax credit. Okay, now we have to match this every time. So what government is given? That every supplier, whatever goods he sells, whatever services he give, he will have to file one GST return known as GSTR1. Okay, in this I will have to give invoice wise details. किसको goods sell किए, किसको services दी, every detail I have to give. Okay, through this GSTR1 with suppliers file, ये invoice detail, ITC details, everything shall be auto populated in recipient's GSTR2A. So जो भी मैं GSTR1 file करूंगा, through GSTR1, this entire invoice input tax credit detail shall be auto populated in recipient's GSTR. He can view this statement. वो check कर सकता है. Clear? See this. ये recipient का क्या है? 2A. से अनिल सर का ये GSTR 2A है. So you can only view. You can only view this. You cannot take any action against this. So ये आप यहाँ पे जाएंगे B2B invoices में. मैंने जो भी गुड सेल किए यहाँ पे पूरे डिटेल आएंगे. ये सारे सेलर के डिटेल्स हैं उनके. So ये अनिल सर ने जिन जिन लोगों से गुड्स खरीदा सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा. करेक्ट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2, रूल 36 सब रूल 4. स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. 2A क्या है ये आप समझ चुके हो. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रूल 36 सब रूल 4. व्हाट इज दिस रूल? सी, मैंने आपको क्या बोला, मैं सेलर whatever GSTR1 he will file, it will be auto populated in recipient's 2A. So suppose he is a recipient, this is his 2A. He had bought goods
of rupees 1 lakh plus 12% GST from Mr. A. Now, this Mr. A had correctly filed GSTR1. So, through this GSTR1, this input tax credit of 12,000 is auto-populated in recipient 2A. Very good. Correct. Perfect. Now, he also availed services of rupees 3 lakh plus 18% GST from Mr. B. This guy also filed GSTR1 correctly. Very good. So, through his GSTR1, entire detail got auto-populated in recipient's 2A. So that is also correct. He can view this. But he took services from Mr. C. 5 lakh plus 18% GST. Now this Mr. C, he did not file GSTR1. For some reason, he did not file GSTR1. Hence, this credit of 90,000 never ever came in GSTR2A of the recipient. I did not file GSTR1. So invoice detail, ITC detail never got auto-populated in recipient 2A. He cannot see this. He cannot view this. Similarly, he took services. Similarly, he took services from this Mr. D. 2 lakh plus 12% GST. Now Mr. D filed GSTR1 बट ही रोड इनकरेक्ट जीएसटी नंबर अनिल सर की जगह किसी और का जीएसटी नंबर लिख दिया सो ये भी 24,000 का आईटीसी इनवॉइस आईटीसी कभी भी रिसिपेंट के 2A में आया ही नहीं सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो what is actual input tax credit as for recipient? It is 1,80,000. If you add all this, eligible ITC was 1,80,000 as per his purchase register. But how much is auto populated into it? Only 66,000. Mr. C and D का ITC तो आया ही नहीं. Correct. Now what rule 36 sub rule 4 explain? ये कब आया? From October 2019. From October 2019 this rule was introduced. What this rule say? Purchase register के हिसाब से what was the actual ITC? 1,80,000. However, in 2A, how much was auto-populated? Only 66,000. Now, how much ITC you can avail in your 3B? How much ITC you can avail in 3B? As per Rule 36 sub Rule 4, recipient उतना ही ITC ले सकता है जितना उसके 2A में है into 110% or you can say plus 10%. So, what is the conclusion here? जितना ITC उनके 2A में है उसका 110%, that is the maximum ITC you can take as per this rule. So ये जो परचेज रजिस्टर में उसको इग्नोर करो, उसको इग्नोर किया जाएगा. जितना 2A में है into 110%, maximum 66,000 plus 10%, 72,600 का ही ITC ले सकता है. So 1,80,000 minus 72,600 जो बैलेंस है वो सब्सिक्वेंट मंथ में जब भी 2A में आएगा तब आप ले सकते हो, तब आप ले सकते हो. सो दिस इज रूल 36 सब रूल 4. परचेज रजिस्टर में जो भी आईटीसी है वो नहीं गिना जाएगा. जितना 2A में है इनटू 110% और यू कैन से प्लस 10% उतना ही ले सकते हो. बैलेंस जब 2A में आएगा तब लोगे आप. सो ये है डेंजरस रूल. बट ये कब से आया? Read the date carefully from October 2019. 18-19 में तो था ही नहीं. Okay. Now let us understand through a case study. This example I will teach you through a case study. Suppose this is a registered person. Okay. See, his annual GSTR 3B means his annual eligible ITC which he had availed in 3B was 1 crore 96. This is what he had availed in 12 months in 18-19. But his annual GSTR 2A जो suppliers file करेंगे GSTR 1 उसके बेस पे जनरेट होता है एनुअल GSTR 2A उसमें दिख रहा ओनली 1 crore 80. सो ये देखो आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू GSTR 9. सी दिस इज व्हाट इज एनुअल GSTR 3B जो ऑटो पॉपुलेट हुआ है यहाँ पे टैब नंबर 6 में 1 crore 96. करेक्ट 1 crore 96 12 महीने का टोटल. बट टैब 8 में आप जाओ तो आप देखो एनुअल 2A में कितना दिख रहा है 1 crore 82 और आपको कितना लेना था 1 crore 96. तो 2A में कम है 14 lakhs. 2A में कम है 14 lakhs है. करेक्ट. नाउ माय क्वेरी टू ऑल ऑफ यू, क्या आपको ये डिफरेंस ऑफ रुपीज 14 लाख रिवर्स करना है? आर यू रिक्वायर्ड टू पे दिस 14 लाख और नॉट? व्हाट इज योर ओपिनियन? आई विल गिव यू माय view. As per my view, you are not required to reverse this ITC. Why? See this. Rule 36 sub rule 4, when it came into life, it came from October 19. We are doing audit of 18-19 and this came in October 19. So rule 36 sub rule 4 was not there in 18-19. Second,
This facility of two-way which recipients can see. When did this also came into life? Somewhere around October 18. Somewhere around October 18. So in middle of the financial year, this came. So for the period April 18 to September 18, I never had two-way or two-way was not proper. So how am I supposed to reconcile? So if both the points are there, as per my view, ITC should not be reversed. ITC reverse mat karo. Okay, this is just my view. Rest is up to you. If there is small difference, 1,000, 2,000, then reverse and pay it. But for 14, 15 lakh, please do not pay. Never pay. Because I have given you the reason. Correct? Similarly, I will like to do one more thing. Suppose this is a registered recipient. For entire financial year 18-19, he had purchased goods and he had paid this GST. He had availed service, he has paid this GST. He has done some capital goods purchase, he has paid GST. So this is what he has done in entire financial year 18-19. So if you add everything, how much was eligible ITC? CGST was 55. SGST was 55 and IGST was 10 lakh 50. This was eligible. This was eligible. But few suppliers, they did not file GSTR1. So it did not came in the recipients 2. So see, auto-populated figure in table 8 is what? CGST 51,650. SGST 51,650. IGST only 10 lakh 37. So difference. You have taken more in your 3B, but in your 2A, it is less. See this. This says I'm showing recipients 2A. You can see now you will go. This is your GSTR 9. Go to tab 8. See this 10 lakh 37, 51,650, 51,650. So eligible as per 3B was more, but in auto populated in your 2A is less. So are you required to reverse? As per my view, you are not required to reverse. Let it be negative. Do not reverse and pay. Small amount you can pay, else please don't pay. Okay. Now, next point. Say this is registered recipient. They are complaining to government that how will I come to know? ये कम है, मालूम पड़ रहा है. आपने देखा स्क्रीन पे पिछले में कि 51,650 है, लेकिन आपका एलिजिबल था 55,000. तो ये 3,000 का जो डिफरेंस है 3250 का, मैं गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ that which supplier have not filed GSTR1 or incorrectly filed GSTR1. How am I supposed to catch that supplier? If I will have to pay, I will recover from that supplier. So how am I supposed to catch? यहाँ पे तो only total figure generate हो रहा है. Huh? So देखो, for this, government has given one solution, a new table which is introduced. This is new update, table 8A of GSTR. This was not there in financial year 17-18. Only for GSTR 9 of 18-19, this new table 8A is introduced. See this. You can see in the screen, download table 8A. This is the new update. You can download table 8A. ठीक है, ये पूरा टोटल है. See this. जैसे आप डाउनलोड करोगे, this will come. This Excel file you need to open. This will give you entire details of your suppliers who have correctly filed GSTR1. You can do this. This is proper Excel file. You can do freeze, unfreeze, everything you can do here. Okay, so this is, suppose I select this party Balaji Trading. So you will get all the invoice of that Balaji Trading company. Correct? So you can identify everything here. What is the CGST amount, SGST amount, IGST amount, whether he has filed GST or not, what is the date when he has filed GSTR1, everything will be auto-populated. So this is your annual GSTR2A. Through this, you can identify which supplier filed GSTR1 correctly and which is correctly auto-populated in 2A. Whichever supplier have not filed, those details will not come here. Call them and ask them that if I will have to pay, I will recover from. So this is the biggest facility, a very good facility given. Through this, you can reconcile that which supplier have not filed GSTR1. So this was our entire point of table 8 and new table 8A of GSTR9. Now tab number 17 and 18 of GSTR9. What is this tab? What is this tab? See, we will see it on the portal. What is tab 17 and tab 18? Tab 17 and 18 are HSN code. Whatever outward supply you give, उसका HSN code. जो आपने purchase किया, उसका HSN code. ये सारी details देनी है in tab 17, 18. HSN means what?
हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर, ये 8 डिजिट कोड है इन रिलेशन टू जो भी आप गुड्स सेल करते हो या जो भी आप सर्विसेज देते हो एंड जो भी आप सर्विसेज एंड गुड्स खरीदते हो उसके रिलेशन। ठीक है। फॉर अगर सर्विसेज हो तो HSN नहीं बोलते, इसको SAC बोलते हैं, मतलब सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ये भी एक 8 डिजिट कोड होता है। पोर्टल को ये डिजिट से समझते हैं। सपोज मैं बोलूं रेंट तो पोर्टल नहीं समझता, वो डिजिट समझता है। सपोज मैं बोलूं रबर गुड्स तो रबर उसको नहीं समझता, वो 8 डिजिट समझता है, कंप्यूटर जैसा। ओके, नाउ नो वन हैज मेंटेन, no one has maintained HSN wise outward supply, HSN wise inward, hardly 1 to 2%। रेस्ट किसी ने मेंटेन नहीं किया। ठीक है, तो ये डिटेल भी आपको देनी है टैब 17 एंड 18। सो कैसे दे, किसी ने रखा ही नहीं है आउटवर्ड सप्लाई, हाउ कैन वी गिव डिटेल्स। एक अच्छा पॉइंट है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 both this tab 17 and tab 18 are optional। this tab 17 and tab 18 are optional। आप चाहो तो भरो, नहीं चाहो तो मत भरो, ऑप्शनल है, नॉट कंपल्सरी। वेरी गुड, क्योंकि किसी ने भी मेंटेन नहीं किया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज टैब 16 ऑफ GSTR 9। टैब 16 एक मैं आपको दिखा देता हूँ GSTR 9 का। यार ये क्या है, 17-18 हुआ, अब ये टैब 16 सप्लाइड रिसीव्ड। अगर मैंने गुड्स खरीदे फ्रॉम कंपोजिशन डीलर्स तो मुझे यहाँ दिखाना। अगर कोई डीम सप्लाई है अंडर 143 या मैंने अप्रूवल पे गुड्स भेजे हैं तो वो सब कुछ यहाँ दिखाना। तो ये डिटेल किसने रखा है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं रखा है। हाउ विल आई कीप रिकॉर्ड कि मैंने कंपोजिशन डीलर से खरीदा है अनरजिस्टर्ड, हाउ विल आई कीप सच रिकॉर्ड। सो ये किसी ने मेंटेन नहीं किया है। सो गुड पॉइंट इन दिस, ये टैब भी ऑप्शनल है, ये टैब भी ऑप्शनल है। तो टैब 16, 17, 18 भरना है तो भरो, नहीं भरना है तो इट्स ऑप्शनल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। ओके, नाउ बोथ द लेक्चर्स यू हैव सीन, बोथ द लेक्चर, आपने लेक्चर 1 भी देखा और आज का लेक्चर 2 भी देखा। डोंट यू थिंक GSTR 9 इज टू कॉम्प्लिकेटेड, टैब्स में आदमी कंफ्यूज हो जाए। इज इट कंपल्सरी टू फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल GSTR 9? सी, GSTR 9 is optional for every registered person जिनका aggregate turnover is below 2 crore, they have to file GSTR 9 optional, not compulsory। But as per my view, मैं एडवाइस करूंगा सबको, जिसके भी पास GST नंबर है, प्लीज फाइल GSTR 9। भले आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे हो, ऊपर आप फाइल करो, बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई एरर्स, ओमिशन, मिस्टेक, कुछ भी हुआ है तो आप इसमें कर सकते हो एंड ये ही अपलोड कर दो। Okay, so this is the point of GSTR 9. So this was our entire topic of part 2 of GSTR 9, how to avail ITC, how to reverse ITC, how to compare with 2A, other some tabs which are optional, everything I've explained. Okay, so hope you have liked the lecture. If you like, I request you to share with maximum people, both the part 1 as well as part 2, so that maximum people can learn about GSTR 9 annual return. Now, just one important announcement regarding pen drive lectures. See, for CA student, cost accounting and CA student, okay, whether inter or final, I am going to start one pen drive e-learning lectures. So whosoever want to learn GST, entire GST, they can order this pen drive. All the recordings will be there, lectures will be there, and even notes will be there. आपके पूरे एग्जाम के क्वेश्चंस एंड सारे नोट्स उसमें कवर होंगे, which and even the office employees who want to seek GST knowledge, practical filing of GST returns, e-way bill, कैसे GST number लेना, and even consultant who want higher knowledge, they can all order for this e-recording lectures। आपको मैं पेन ड्राइव दे दूंगा, you can use it, correct? And all the notes will be given. Now, what are the topics that will be there in this pen drive? Okay, entire GST like introduction and supply, place, value, time of supply, ITC का पूरा detail में, registration, reverse charge, imports, job work, all this topic including e-way bill, advance ruling, anti-profit, latest case laws होंगे advance ruling के with their verdict, assessment, inspection, demand, recovery and GST returns वो भी वहाँ पे cover होगा। And some specific sector like cooperative housing society ka GST, how it work, education industry, how it work, and few exam will also be taken, case studies lecture, ये सब recorded होगा, आपको खुद ABC गेम की तरह के खेलना है, करेक्ट? एंड मैंने कुछ 5 एग्जाम क्वेश्चंस भी है May 19, वो स्टूडेंट्स के लिए, वो मेंबर्स के लिए नहीं है, एंड सम लाइव लेक्चर्स फॉर डाउट सॉल्विंग। जो भी आपके डाउट होगा, यू कैन मेल एंड वी कैन हैव इट ऑन Zoom. Okay, see,
हाउ टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये भी आपको सीखने मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन इट. ओके, देन हाउ टू प्रिपेयर एन ई वे बिल, कौन से केस में ई वे बिल बनता है, कैसे आपको ई वे बिल वेबसाइट पे करना है, वो भी सारा रिकॉर्डेड होगा, विच यू कैन लर्न थ्रू दिस पेन ड्राइव लेक्चर्स. एंड प्रॉपर फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, वो भी आपको ए टू जेड वो पेन ड्राइव लेक्चर्स में मिलेगा. जीएसटीआर 3B कैसे भरते हैं, GSTR 1 कैसे करते हैं, वो सारा रिकॉर्डिंग वहां पे होगा थ्रू FAQs, सो दैट यू पीपल एंजॉय. ओके, अगर आप इंटर सीए स्टूडेंट हो, ये पेन ड्राइव का कॉस्ट होगा 2299 पर पेन ड्राइव. फाइनल सीए स्टूडेंट हो तो 2599, क्योंकि उसमें काफी एडिशनल टॉपिक्स होंगे. एंड अगर आप ऑफिस एम्प्लॉय एंड प्रोफेशनल हो, आपको वो केटरिंग सेक्टर, देन कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड अदर सेक्टर स्पेसिफिक चाहिए, एंड प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न सब चाहिए, तो आपके लिए कॉस्ट होगा 289. करेक्ट, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो ये नंबर पे, एंड देन ईमेल भी है इफ यू नीड दिस पेन ड्राइव. Okay, so thank you so much each and everyone. This was today's topic. Again, I will keep introducing new lectures. जो भी latest update होगी आप मेरे YouTube channel पे देख पाओ. Thank you so much each and everyone. Goodbye. Take care.